Mommy Track Daddy Whispers podcast is now called Birth Agni Podcast. And he was kept on ventilator for 7 days and was in the hospital for 12 days. And after that, I was, really requesting the hospital that please let me breastfeed him, Yeah, because the juices that they were giving to the child were all these packed. sugar juices. Yeah, They were giving through packed IV. juices. Yeah, through IV they were giving packed juices. This is the Birth Agni podcast, the fire that brings us alive, that burns myths and opens a channel of authentic natural birth stories. This show debunks the many myths of the medicalized births, showcases the plethora of choices a pregnant couple can make to embark on their empowered birth journey. I'm Divya Kapoor, a certified birth and lactation counselor and an aspiring traditional birth attendant. Let's get the flames blazing high. Kanika's breech birth story is a reminder that breech babies can be born vaginally. And that's the reason we have this story today. A lot of the times, doctors क्या कहते हैं? Breech नहीं हो सकता. Breech cannot be born vaginally. And you have to undergo a surgery if you have breech. The problem with this is that there are a lot of research papers that say that breech babies are safer born vaginally, and what does one need to assist breech births being vaginally is to learn the basic maneuvers to help a breech baby if the breech baby gets stuck. Oftentimes, doctors will diagnose a breech baby at 28-29 weeks, which is too early to diagnose a breech because काफ़ी सारे breech babies turn हो जाते हैं somewhere around 39-40 weeks, और आपके लेबर के साथ भी काफ़ी सारे बच्चे टर्न हो जाते हैं. Many of us do not know about surprise breaches, meaning आपका baby throughout cephalic था and then decided to turn breech. It's rare, very rare, but that can happen. A baby being in breech is a safety mechanism that the baby takes to ensure that they are safe when they are in your womb. So a baby being breech is not an abnormality, and a baby that's breech can be born vaginally. Well, yes, there can be times that a breech baby gets stuck while being born. There is a different way a breech baby navigates your pelvis, meaning your birth canal, which is why it becomes important for your care provider to learn the maneuvers to help a breech baby if required. A lot of breech babies can be born vaginally, hands off, meaning you should not be touching them. That's the protocol. So, breech babies can be born vaginally. But it's very important that you speak to your care provider and demand it if you are decided on a hospital. Where are you decided to birth is so instrumental in today's times because a lot of hospitals have their protocols which stop you from being able to birth the way you want. It doesn't have to do with you having a breech baby that's an abnormality or you unable to birth your breech baby, because breech babies can be born vaginally and the baby does the work of birthing. Having said that, I have a disclaimer for this episode. The aim of this story is not to propagate a wild pregnancy for everyone. Yes, I love it, and a lot of people can absolutely have wild pregnancies. But a wild pregnancy, first of all, what is it? It is a pregnancy where we refrain from checkups and allow nature to take its course, just like fellow mammals. It is a common phenomenon in the West, and I love it, but I will not just recommend it to everyone without explaining what it entails. So अगर आपको पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, you do not know what are the risk factors, you do not know when is it that a medical help or seeking a care provider will be helpful because you do not know it all, तब तक you should not. I will not. You can do whatever you like. I will not propagate a wild pregnancy. Having said that, a lot of women can still have wild pregnancies, barring that they know what they're going for. If they are sure of what they're going from
Absolutely, a wild pregnancy can be beautiful and it's peaceful. Nothing in birth is the safest, yet the process in itself is essentially safe. So a lot of births go absolutely clean, absolutely without any problems, without any issues, which is why a lot of women are going for wild pregnancies, connecting with themselves and trying to learn what is it that their body is telling them. So when they see that something is off, they reach out for help. When they don't, they just live with it. But I don't recommend it for everyone, because not everybody is very well connected to themselves or have the wisdom to go against their own ideologies and don't risk themselves or their babies' lives. And it is for an individual or couple to explore what they wish to do when they have all the knowledge of the impeccable design of nature and potential risks in birth, and then work on inherently know what does or does not apply to them. That is where it all begins. That's sovereignty. That's taking responsibility. Also, how does the actual picture of this experience make them feel? This is taking responsibility for self and then doing what seems okay to us, irrespective of what is being hyped in and around us. So be it home births, free births, birth center births, and so on and so forth. Know what it is that aligns with you as an individual. Your learning, your experience, your faith, all of that comes into picture. There is never one right answer, and often what calls to us individually is our right answer. Think about it. After this disclaimer, let's indulge quickly into the story of how Kanika and her husband owned their birth choices with complete knowledge and responsibility. Enrollment for April classes is on. If you want to enroll with me for the childbirth classes, because that also helps you really decide what is it that aligns with you or not. What is it that you really want to do to make sure that you have the birth that you imagine, but knowing full well that birth is an uncharted territory and it is wild in itself. So knowing all of that, you can still work on your birth journey. Visit www.birthagni.com for more information and follow me on Insta at Divya Kapoor VOX Vox DIVYAKAPOOR VOX. See you there. Hi, Kanika. Hi. So, Kanika, you're here with us because you had a vaginal breech birth in India, Yes. in Noida. And that is a rarest of the rare phenomena. And a lot of women... Really? Yeah. It's not rare in the sense of it cannot happen. It's rare because a lot of women, when they have breaches, they are scared that they'll undergo a surgery. And sometimes it implies that having a breach is an abnormal situation or is an abnormal position in itself. So, but you tell us that your story really tells us that you had a vaginal breech birth, so it's possible. And how did it all happen? Tell us the story of your birth. Let's begin. Yeah. Yeah, so I don't know if it was a blessing in disguise, but I stopped showing to the doctors post 6 months of my pregnancy because, as you know, the maternity care, how it is here in India, I don't know about abroad, but यहाँ पे things are very different. And it's not like they don't support you as a mother. And, I have showed to the best of doctors in Delhi in terms of maternity care. I thought that at least I would strike chord with at least one doctor. I mean, I don't want to name anybody, but yeah, I have gone to the best of doctors in Delhi. And पूरा pregnancy, मतलब starting में तो बहुत struggle था. Struggle इसलिए not because मेरा एक mindset था, लेकिन फैमिली का माइंडसेट अलग होता है. सो दे हैड डिफरेंट थिंग्स इन माइंड. उनको लगता था कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है, आप आए दिन अल्ट्रासाउंड्स कराते रहो, डॉक्टर्स जो बोलते हैं वो सप्लीमेंट्स खाते रहो. तो मुझे वैसा नहीं लगता था क्योंकि मैं नेचुरोपैथी फॉलो करती थी और मुझे लगता था कि ये जैसे आप खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, दिस इज लाइक अ नेचुरल प्रोसेस. आई मीन यू मेड फॉर दिस, योर बॉडी इज मेड फॉर दिस, सो यू कैन नेचुरली डू इट.
तो पहले डॉक्टर को जिसको दिखाया उन्होंने तो मुझे बोला आप मतलब इतने सारे मेडिसिन लिख दिए विदाउट इवन कंसिडरिंग माई ओन हिस्ट्री और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। पहले तो बहुत लोग आपको जज करते हैं आपकी बॉडी को लेके, क्योंकि आप उन पैरामीटर्स में ठीक नहीं बैठते। उनके जो पैरामीटर्स होते हैं कन्वेंशनल पैरामीटर्स, आप उसमें ठीक नहीं बैठते। आई हैव ऑलवेज बीन अंडर वेट। इफ यू consider the WHO norms, then I am underweight, and I've always been like that. It's not that I feel weak or something, but it's in the genes, I guess, because my mother is still, maybe 45 kgs or something. So I have always been like that. Yeah. So then they say कि अच्छा वेट कम है तुम कैसे बच्चा पैदा करोगी। I mean that's the thing they say. तो अच्छा आपका वेट, when I conceived I was 40 kgs. And during the whole course of my pregnancy, I just gained 4 kgs of weight. And I was back to normal as soon as I delivered. So, 4 kgs for them was abnormal. And breach मुझे पता ही नहीं चला था क्योंकि मैं after that whole struggle of 6 months, मुझे ऐसा लगा कि कोई डॉक्टर समझ ही नहीं पाएगा. And I left it to God. I thought that and I was taking these classes, childbirth education classes from Arpita Shankar ji. She's from Hyderabad, and she's one of the best person I've met as doulas, or I don't know, she's very confident about whatever she feels for. I mean, she transfers that to you. So I had this whole thing. She told me that I will support you. We know like how labor progresses. So I told her that I'm not going to any doctor. So she said that if you're feeling fine, if the baby movement is there, then no need. It's okay. So I thought that a very low-key nursing home would be a better option than a big hospital because of a large number of protocols there. उनके बहुत सारे, मतलब हम मीटिंग में भी जाते थे किसी के साथ हॉस्पिटल में, तो उनकी जैसे MBA स्टूडेंट्स नहीं होते, अलग से कोई डॉक्टर नहीं मिलता था पहले, पैकेज के लिए कोई अलग बंदा मिलता था जो आपसे पूरे चीजें डिस्कस करता था। तो मुझे लगता था कि लाइक व्हाट इज हैपनिंग, What is this package for? एग्जैक्टली। Yeah. तो नहीं, वो वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। तो ठीक है, नर्सिंग होम हमने बात करी उनसे, शी वॉज अ वेरी गुड डॉक्टर। हमने बोला कि हमें, हालांकि उनको विजाइनल टीयर के लिए भी हमें एपिसियोटमी के लिए हमने बोला कि हम नहीं चाहते, तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो होता ही नहीं है, लाइक हमें तो ये करना है, फर्स्ट बर्थ है तो ये तो करना ही है। पर हमने बहुत समझाने की कोशिश करी, हमने सोचा चलो ठीक है देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन जब ब्रीच में लेबर पेन स्टार्ट हुआ, पहली बात तो हमें पता ही नहीं था कि वो ब्रीच है। तो लास्ट अल्ट्रासाउंड कोई हुआ था आपका? 6 month was the last. 6 month was the last. Was the last. And तो palpation किया था इन डॉक्टर ने नर्सिंग होम में? हाँ किया था। I went to like if I say there's a clinic in GK ग्रेटर कैलाश, उर्वशी सहगल जी के क्लिनिक के साथ में ही एक क्लिनिक है फीटल एग्जामिनेशन का, जिसमें वो अल्ट्रासाउंड सेंटर है एक, एंड दे डू अल्ट्रासाउंड सो प्रिसाइजली, 1-1 घंटे तक अल्ट्रासाउंड चलता है। मतलब बहुत एग्जामिनेशन, आपका अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस इतना सेंटीमीटर तो इतना होना चाहिए। आप ऐसा हो सकता है कि आपका, उन्होंने मुझे बोला ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, हो सकता है कि वो 1-2 हफ्ते पीछे चल रहा हो। तो मैंने कहा कि आई मीन हाउ कैन यू से दैट? उन्होंने बोला क्योंकि आपका अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जितना होना चाहिए ना उतना नहीं है। तो आई थॉट कि लाइक आई एम नॉट फ्रॉम अ मेडिकल साइड, सो आई डोंट नो। सो आई सेड कि आप ये बताइए, लाइक एज अ ले मैन आई आस्क्ड कि आप ये जान पा रहे हैं कि बच्चे के ऑर्गन्स ठीक से डेवलप हो रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ वो ठीक है। तो मैंने कहा फिर कैसे, मतलब हाउ कैन यू से कि सही से डेवलप नहीं हो रहा? और मैंने कहा 2 हफ्ते पीछे चलना या 1 हफ्ते पीछे चलना इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न एज आई थिंक। वो तो सबका अलग हिसाब होता है, इसमें कोई इतना आप सेकंड बाय सेकंड थोड़ी ना नाप सकते हैं कि अभी इतना ही होना चाहिए, सबका अपना अलग हिसाब होता है। और इसीलिए ही उसी डेवलपमेंट के हिसाब से कोई 42 वीक्स पे लेता है जन्म, कोई 40 वीक्स पे लेता है, कोई 44 पे भी लेता है। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप ना ये ब्लड थिनर्स कुछ होते हैं, आप वो लीजिए। This is the ultrasound guy told you to take blood thinners. No, after showing the ultrasound to the doctor, very senior doctor again,
She told me that I don't think natural diet can a lot help. You can take these supplements and blood thinners. I said that, do you think that a blood flow is not normal towards the uterus? She said, no, I don't think so. Then if you don't think so, then why should I take blood thinners? Yeah. It will yeah. support the growth of the baby, they said. Blood thinners will support the growth of The baby. I don't know how, like medically, I don't know how. But this is like a very senior and experienced doctor in her 70s or 80s, I guess. So, yeah, I said, okay, I just came back. Because, there's no point, holding that Arguing or argument. discussing. Yeah. Your blood volume naturally increases 50% in your pregnancy, and that will be in ratio with your blood in itself. There is no need to thin the existing blood using artificial drugs, because as your blood thins, your RBC also in proportion to that increases, but not at the same extent. So there's a mapping that's already happening in your body. But if you and the baby are doing well, that means that is happening in the body. That's the very basis of the blood flow to the placenta. Yeah, so then ultrasound was so detailed, and without taking your permission, they, all kinds of things that happen, Yeah. पता नहीं डॉपलर था या क्या था, उसमें उन्होंने इतना, इट वाज इरिटेटिंग. मतलब उन्होंने एक तो वो हाथ से करते हैं चीजें. देयर वाज अ मेल अल्ट्रासाउंड पर्सन. पहले मुझे लगता है कि आपको परमिशन लेनी चाहिए, आपको पूछना चाहिए वेदर यू आर कंफर्टेबल और नॉट. और फिर वो बहुत ही रफली करते हैं, मतलब शायद जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हो. Yeah. तो मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मुझे अच्छा नहीं, आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, एंड आई सेड दैट आई विल नॉट कम बैक टू दिस clinic again ever. Yeah. It could be that clinic also. For example, I had a fine experience with my ultrasounds with my daughter, because that guy was senior and he would not go anywhere without telling me what was happening. He would convey to me, constantly tell me, I'm checking this on this side. I'm going to get you to turn this side because this is how I'm going to check. Baby is taraf hai, baby aisa ho raha hai, abhi kaisa chal raha hai, kya ho raha hai. He would discuss every bit of what he was checking with me. He said that the baby is sticking onto one side at the bottom somewhere, I don't know. Which is fine. Yeah. So he said he's not moving from that side since half hour. I said, I mean, I don't know. Like, how would I know? Why is he not moving? So he just, waited. He'll move. So Yeah. I don't know, like medically. Your experience could resonate with a lot of mothers. Asking for consent is the very basis of how you culturally speak to someone. So this is more than a medical basis. This should be a very cultural and social basis of how you serve someone, especially in a very intimate space, in a very sensitive space. This is a very Right. sensitive space, and it's body. And then you treat somebody like a patient. I have a problem with this. So Ah. you sign the form writing the patient's name and everything. So I asked them, like, I'm not a patient. Why are you asking me to, I mean, they treat it like a patient that's, you're going through some disease or something. Yeah. And it's not at all empowering. Like, it should be an empowering experience, right? Yeah. But generally, I don't know how it has happened in a few years. Like, अब कुछ पिछले सालों की बात लो, तो I don't know, because of unawareness or what, not having confidence in your own body, that people have started really, like women I'm talking about, वो खुद अपने आप को as a victim, वो समझती हैं that they can't do it. They can't do it because people around them, हर आदमी के पास कुछ कहने के लिए है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें नहीं खाना चाहिए. आप क्या चाहते हो, that is nowhere. Yeah, the collective consciousness doesn't have as many examples of women doing things according to themselves and coming out with as fine as someone just following the authority. By authority, I mean the medical system. So in the ultrasound, this ultrasound that you were describing, ये 6 महीने पे हुआ था. This was at 6 months. हाँ, this was at 6 months. This was the last ultrasound. हाँ, and उसके बाद जब palpate किया था डॉक्टर ने, what was the last time? Was it near your pregnancy? So I'm trying to assess that, was this a surprise breach? Yeah. Yeah, it was.
because for 3 months we didn't go to any doctor, and my expected date was 24th of September or 25th of September, and this was 10th of September. And during my whole pregnancy I was very active. Like one day before 10th of September I was roaming around somewhere, and then I used to do yoga, I used to prepare my breakfast, have prepare my lunch, and run around and actually run. Not like literally run. So people used to say that she's mad, like your family members, that she's doing some, like they were afraid also. They said that ye kaise ho sakta hai. But because I had been doing all of that, and what you had been doing, and if you are That's feeling it, comfortable in that, yeah, then I think that's okay. yeah. So till the last moment I didn't get to know. Okay, and how did then the pain start and everything? Like this is 4:15 or something. Post my lunch I felt a little abnormal, and then I started passing stool like anything. Like it's like enema. Natural enema. Yeah. And then I thought, as per what classes I got, I thought that it's going to progress slowly over a period of time. I thought that, like, generally it happens like that. तो मेरे हस्बैंड ने कॉल किया, तो मैंने कहा नहीं नहीं, थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है पर, और थोड़ा सा ब्लड आया, थोड़ा सा. तो उन्होंने पूछा कि मतलब he asked me that shall I come. I said no, I don't. I think it's going to progress slowly. So within a span of 10-15 minutes, it progressed like from here to here. And this was intolerable. That pain was intolerable. And then, as told by Arpita also, she told me that you have that warm water bath and all those things. I started having that. Yeah. And then my pain progressed like anything. And we had to rush to the hospital, which is nearby, which is Motherhood Hospital. It was there in Sector 48, Noida. And, they were surprised. कि ये This तो was एक the लौता evening. केस है. हाँ, this was evening. This was around 5:36. तो उनको लगा ये तो मतलब अनोखा केस है कि पता ही नहीं पहले डॉक्टर किसको दिखाया था, ये भी नहीं पता कि ब्रीच था, तो कुछ फिशी है. उनको ये लगा कुछ फिशी है कि मतलब हाउ कम यू डोंट हैव अ डॉक्टर, हु आर यू शोइंग टू. और हमें समझ ही नहीं आया कि हम क्या बोले, किसको दिखा रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप अपनी फाइल दिखाओ. तो जितना हमारा फाइल था हमने दिखा दी. तो कोइंसिडेंटली हम मनीषा करके एक डॉक्टर थी जो फोर्टिस में भी जाती है और वहां पे भी एज अ विजिटिंग डॉक्टर जाती हैं, तो हमने बोला हमने उनको दिखाया हुआ है. तो वो 4th month तक मैंने उनको दिखाया था. वो जो एस्पिरिन या कुछ भी बोलती थी हम लेते नहीं थे, बट हाँ आई शोड टू हर ड्यूरिंग द लाइक स्टार्टिंग मंथ्स. So even in the beginning, somebody prescribed a blood thinner to you. Aspirin दिया था उन्होंने तो. हाँ, 4th month, 4th 5th month में. और भी बहुत सारी चीजें थी, प्रोटीन को लेके बहुत सारी चीजें थी मतलब. But then, with simultaneously with that, I was consulting Shailendra ji also. Shailendra ji is a naturopath, and like he's a very knowledgeable person. He stays in Hyderabad, and so I used to take his sessions on fermented foods, on natural living and all of that. So something used to come up, I used to call him कि अब ऐसा आ गया, मैं क्या करूं, अब ऐसा आ गया, मैं क्या करूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता था. तो उन्होंने बोला कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना टेंशन में मत आओ, और जो अच्छा लग रहा है करो, और मतलब बी ऑन अ नेचुरल डाइट, बी ऑन क्लेंजिंग फूड्स. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ा मिथ उन्होंने मुझे ये बोला कि ये है कि 2 लोगों का खाना खाओ. Right, yeah. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि 2 लोगों का खाना खाओ, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा. जितनी भूख लग रही है उतना खाओ, और क्लेंजिंग फूड्स खाओ, रादर अ लॉट ऑफ ग्रेन्स, क्योंकि मुझे ब्लोटिंग हो जाती थी और मेरा डाइजेशन बहुत स्लो हो गया था. तो उन्होंने बोला कि क्लेंजिंग फूड्स ज्यादा कंसंट्रेट करो. एंड आई वाज अ वीगन ऑल थ्रू माय प्रेगनेंसी. तो मैं नारियल की मलाई एक्सटेंसिवली यूज करती थी. तो मतलब जितनी बार भी नारियल पानी पिया, उसकी मलाई कभी स्मूदीज में, कभी कुछ में, ऐसे करके मैं यूज करती थी. तो मतलब उससे मुझे ब्लोटिंग नहीं होती थी. बट अदरवाइज अगर मैंने डिनर ऐसा कर लिया जिसमें मुझे ग्रेन्स हैं, दाल चावल या कुछ ऐसा, तो आई एम गॉन देन. मुझे सूट नहीं करता था वो बहुत ज्यादा. सो दिस वाज द केस.
सो देन आई रीच द हॉस्पिटल, सरप्राइज हो गए. तो उन्होंने बोला ये तो ब्रीच है. उन्होंने कुछ अल्ट्रासाउंड ऊपर से या कुछ समथिंग दे डिड, वो ऊपर से कुछ मेजर भी करते हैं ना, शायद उससे उनको पता लग गया कि ब्रीच पोजीशन है. तो दे सेड, और मेन डॉक्टर हॉस्पिटल में उस टाइम थे नहीं, तो उन्होंने बोला कि ये तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी. तो मैं ऑलरेडी इतने पेन में थी उस टाइम, तो मैं उस पेन में भी चिल्ला रही थी कि नहीं आप, मतलब मैं फुली डायलेटेड हूँ, वी कैन ट्राई दिस. उन्होंने बोला कि नहीं, सर्जरी तो करनी पड़ेगी. एंड द one thing that really bothered me at that time was that, you know, as your family, they split your family. एक बंदा जाएगा जो हमेशा आपके बिल्स पे देखता रहेगा, दूसरा साइन करता रहेगा, कोई भी आपके साथ नहीं होगा, फॉर्मेलिटीज में लग जाएंगे. सो आई सेड दैट आई वांट माय हस्बैंड हियर, आई रियली वांट माय हस्बैंड टू बी हियर. सो वो कहते कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, हस्बैंड विल नॉट बी हियर. हाँ ठीक है. मतलब लेबर रूम बिकॉज यू वर फुल्ली नो, आई वाज नॉट बिकॉज लेबर रूम अवेलेबल ही नहीं था उस टाइम. ओके. वो कोई इमरजेंसी रूम था, पता नहीं कौन सा रूम था, क्योंकि वो मुझे याद है कि वो मशीन्स उस रूम में लेके आ रहे थे सर्जरी वाली. ओके. कि they were preparing for it. Even before the consent was signed, they were preparing for it. So then जब उन्होंने मेरे हस्बैंड को और मेरी मदर इन लॉ को ये बात बोली, तो उन्होंने बोला नहीं उसका तो दिल टूट जाएगा कि we can't let this happen. वो तो मतलब बोलेगी कि हमने तुम्हें एक चीज तुम्हारे हाथ में दी और हमने गड़बड़ कर दी, हम ये नहीं कर पाएंगे. तो कहते आप हमें टाइम दो. तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब इतना वो लेबर पेन में है, आप कैसे टाइम मांग सकते हो इस टाइम पे. तो तुरंत मेरे हस्बैंड ने, जो मेरी चाइल्ड बर्थ एजुकेटर थी, उनको फोन करा, अर्पिता जी को. एंड अर्पिता जी वाज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, वो किसी हिल टॉप पे थी, नेटवर्क ढूंढ रही थी. तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये मतलब इमरजेंसी है, वी हैव टू टॉक. तो उन्होंने बोला जस्ट वेट, आई एम गेटिंग ऑन टू द हिल टॉप सो दैट आई कैन हियर योर वॉइस. तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे केस है, और उन्होंने बोला अगर हॉस्पिटल का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है ब्रीच में, यू कैन गो फॉर दिस, you should try. I mean, have confidence. I think it will happen. So my husband said that I am ready to take the risk. Like I can. उन्होंने क्योंकि बेबी के बारे में ऐसे बोला कि उन्होंने पूछा कि मदर को तो कोई रिस्क नहीं है. उन्होंने बोला नहीं, मदर को नहीं है, बेबी को रिस्क हो सकता है, ये अटक सकता है, वो अटक सकता है. You know, I mean how they say. breach में the only thing is if the baby gets stuck, you should know how to maneuver the baby. It's that. Yeah. So but that doesn't really happen in the hospital, as I have seen. I mean, they don't try to move the position of the baby. I have seen with my colleagues and with my cousins also, they don't do that. I mean, it's out of convenience that they'll say that, you know, surgery is the only option. Rather trying to change the position of the baby. It doesn't happen in or the the hospital. mother for that matter. Yeah. So then उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब उन्होंने साइन नहीं किया. उन्होंने बोला कि you try for normal. After 5 minutes, you won't believe, he was born. After 5 minutes. After 5, and you were lying on your back. What was happening? What did it look like? I was lying on my back, and there were female, not doctors, nurses were there. No doctor was there at that time, but they were helping me. But you know, the nurses, they were telling me, you're not cooperating with us. Why are you shouting so much? तो मैंने बोला कि मतलब आप किस तरीके का कोऑपरेशन चाह रहे हो मुझसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पेन में थी उस टाइम. तो मतलब वो तो निकलेगा ही. तो मैं थोड़ा सा were you pushing? Yeah, I was. और नहीं, एक्चुअली ना वो अपने आप ही पुश डाउन हो रहा था. अपने आप ही प्रेशर नीचे लग रहा था. एंड आई रिमेम्बर जब वो लोग सिजेरियन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला पुश मत करो, आप मतलब उसको रेजिस्ट करो. तो मैंने कहा मैं रेजिस्ट कैसे करूं? मैंने कहा मैं वो हो ही नहीं रहा रेजिस्ट, मतलब वो तो प्रेशर अपने आप नीचे लग रहा है ना. मैं हाउ डू आई रेजिस्ट? रिफ्लेक्स हो रहा है. हाँ, मतलब हाउ डू टेक इट अप? यू कांट टेक इट अप ना. इट विल हैपन लाइक दैट. And in a lot of physiological births, fetal ejection reflex happens and women do not need to push. And जो काफ़ी guided pushing होती है, वो कई बार happens before the time the baby and the mother are ready. So when the baby is already coming, कई बार the mother doesn't have to do anything extra. It just comes. It's an out of the body experience. Yeah. So it was like that only. मतलब push मेरी तरफ से नहीं हो रहा था, वो अपने आप ही वो pressure ही ऐसा था. So I tried to sit. Like
बिकॉज आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक, सो नेचुरली मैं ऊपर आने की कोशिश कर रही थी. मतलब उन्होंने उसको ऊपर नहीं किया था बेड को, मैं खुद ही ऊपर आने की कोशिश कर रही थी. एंड देन वो अपने आप ही वो प्रेशर लग रहा था. Were you able to be upright when the baby was No. coming? नहीं. No, ठीक है. I was still lying on my back only, though a little sitting. ठीक है. More inclined? You mean like more laid हाँ, back? more inclined, yeah. not like Yeah. totally lying on bed, not like ठीक that. है. And the only person who was little supportive at that time was a male nurse. Like he was supporting me to a large extent in that hospital, but otherwise females जितने भी डॉक्टर्स या नर्सेस थे वो थोड़ा सा. फिर उसके बाद डॉक्टर आ गई, मनीषा डॉक्टर आ गई. एंड देन वो जब आई तो बच्चा लाइक तक्ष वाज ऑलरेडी बॉर्न. और फिर वो मतलब एपिसियोटमी के स्टिचेस होते हैं, वो करने के लिए आ रही थी. देन शी टोल्ड मी, अरे तुम्हें क्या जरूरत थी इतना पेन लेने की, इतना पेन ले लिया तुमने. तो मुझे लगा क्या जरूरत थी, मतलब कि मतलब शी माइट हैव थॉट कि यू नो दिस कुड हैव हैपेंड in an easier way through surgery or something. Surgery. But, yeah. But that's very perspective, right? I mean, that's projecting your perception onto somebody who would have really wanted it. Instead of congratulating, if that's the first thing you say to a mom, instead of telling her, wow, you just did it and you have your कि baby. मतलब ना तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुमने इतना दर्द ले लिया. और एक तो मतलब ऑब्वियसली आपको सब लोग जज तो करते हैं कि लाइक आई स्टिल आई डोंट लुक लाइक अ मदर. तो उनको देख के लगता है कि अच्छा ठीक है, तुमने बच्चा पैदा कर लिया. तो तो मैंने कहा अच्छा मतलब ठीक है. दे डोंट कंसिडर यू टू बी स्ट्रांग और यू नो एम्पावर्ड और व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर बॉडी. इट्स नॉट लाइक दैट. Yeah, and the episiotomy was done by the nurses there. Yeah, it was done by them They only. done it. Yeah. हाँ. तो उस टाइम पे वो ये था कि ठीक है सर्जरी नहीं हुई, एपिसियोटमी में ही मतलब काम हो गया तो ठीक है. इट्स नॉट लाइक You win फिर some, भी you lose आई some. वाज It's the bargain. या राइट. Yeah. And then I stayed at the hospital. Then you know after the birth of the baby I was shivering for a very long time as a natural thing happening. And then at that moment I was asking, मैं उस टाइम पे भी पूछ रही थी नर्सेस से कि आपने मुझे कैनुला लगा रखा है, आप कुछ मुझे चढ़ा तो नहीं रहे, आप इसमें क्या कर रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग. मतलब मैं बहुत बेहोशी की हालत में थी, बट स्टिल आई वाज कॉन्शियस ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड मी, क्योंकि मुझे क्या दिया जा रहा है. हाँ, पोस्ट बर्थ कि मुझे क्या दिया जा रहा है, आपने ये क्यों लगा रखा है. तो उन्होंने बोला कुछ नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ हमने कैनुला लगाया है कि कुछ देना पड़े तो उसके लिए हमने लगा रखा है. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर आई वाज सेइंग कि वेयर इज माय हस्बैंड, कॉल हिम, व्हाई इज ही नॉट हियर. तो वो ना ऐसे सुन के चले जाते थे कि हाँ हाँ ठीक है बुलाते हैं. मतलब दे वोंट कॉल बट दे से हाँ ठीक है we'll call. उसके बाद फिर I said that I want नारियल पानी. I wanted like आप मंगा दो प्लीज. तो उन्होंने बोला नहीं, नारियल पानी तो अलाउड ही नहीं है बर्थ के बाद, ठंडा होता है. तो मतलब मैंने बोला कि ल्यूकवार्म करके या जो भी, बिकॉज आई वाज वेरी यूज्ड टू इट, लाइक माय बॉडी like it suits me. So मतलब मुझे जूसेस या नारियल पानी सूट करते हैं काफी हद तक, मतलब ठंडा नहीं करते मेरी बॉडी को. Yeah. तो it's also there is one thing and then the second thing is if the mother really wants it and knows what she's doing. हाँ. So yeah. तो I asked for it, they said नहीं ये तो अलाउड नहीं है. फिर मैंने बहुत जिद करी, मैंने बोला आप इसको बुलाओ, आप उसको बुलाओ, आप मेरी मदर को बुलाओ, मेरे हस्बैंड को बुलाओ. मतलब मैंने शोर मचाना वहाँ पे शुरू कर दिया कि आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, आपको लग रहा है मैं बेहोश हो रही हूँ, आप ऐसा नहीं है, आई नो वट एवर इज हैपनिंग, आप बुलाओ, मुझे अभी चाहिए. फिर मेरे ख्याल 9-10 बज रहे थे, तो मेरा भाई पता नहीं कहाँ पे कौन सी दुकान खुलवा के लेके आया था. एंड देन आई वाज गिवन, कहते मतलब वो पूरे हॉस्पिटल को पता लग गया था कि कुछ अलग ही केस है, कि ना पता नहीं कैसे कैसे पेशेंट्स आ जाते हैं, अपनी ज्यादा चलानी होती है इनको, और मतलब हर चीज पे यू नो दे आर आस्किंग फॉर व्हाट दे वांट. तो मतलब आई थॉट दैट दिस इज नेचुरल, लाइक yeah this is the basic. And the baby happened within a few minutes of you reaching the hospital, half an hour or so, was it? Yeah, within half an hour.
and all within this half an hour. happened within half an hour, and the baby was born. Like, who attended to the baby? The nurses and Yes, the nurses. And just after he was born, doctor came. And then they said that बच्चे को देख लो, ये बेबी है. उस टाइम पे मैं ज़्यादा क्लूलेस सी थी. मुझे लगा अच्छा ठीक है. मतलब मैं अलग उसमें थी. मुझे लग रहा था कि इन्होंने स्टिचेस लगाए हैं और फिर मतलब एक आप थोड़ी बेहोशी में होते हो. नशे क्योंकि में शायद होते हैं. आपको There is the birth high, and you sometimes you take a few minutes to come back to reality, and you're still in the zone of birth, and then slowly you come. Yeah, and then what happened is बर्थ होते ही उसको वो अलग NICU में ले गए बच्चे को. एंड देन बिकॉज आई टुक माई क्लासेस थैंक्स टू अर्पिता जी, शी सेड कि विद इन 1 hour ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल मिल्क इज इम्पॉर्टेंट. तो फिर मैंने उसके लिए बहुत बोलना शुरू कर दिया कि आपने अलग क्यों रखा हुआ है, इज देयर अ प्रॉब्लम, व्हाई इज ही इन NICU, व्हाई इज ही नॉट विद मी. तो उन्होंने बोला कि अरे आप इतना हल्ला कर रहे हो हॉस्पिटल में, ऐसा है वैसा है, हर चीज़ आपको अपने हिसाब से चाहिए. मैंने कहा ऐसा नहीं ना, मतलब ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे चाहिए अपने हिसाब से, आप उसको लेके आओ मेरे मतलब आई वॉन्ट हिम टू बी हियर. तो उसके बाद मेरे हस्बैंड, थैंक्स टू हिम ऑल्सो, ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट कि नहीं, आप उनके फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो बच्चे को कुछ वैक्सीनेशन, मुझे नहीं पता उससे पहले लगाई थी या बाद में, विटामिन के और समथिंग. बट देन दे वर डूइंग समथिंग, सम चेक्स और समथिंग NICU में कर रहे होंगे वो लोग, जिसमें टाइम लगता है. तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, अभी 1 घंटा इतना बीत गया आप ऑलरेडी, आप प्लीज लेके आओ. तो मेरे ख्याल 1.25 घंटे बाद वो लेकर आए थे. एंड देन क्योंकि आपको पता है कि मतलब स्टार्टिंग में मिल्क एकदम से नहीं आता है, मतलब वो नर्स को हेल्प करना पड़ता है. एंड इट्स न्यू फॉर यू ऑल्सो, आई मीन इट्स नॉट अ वेरी रेगुलर थिंग फॉर यू. तो उनको हेल्प करना पड़ता है उसको एक्सट्रैक्ट करने में. तो मतलब depends. Now some babies do latch on their own. You just bring them to the breast, they do the job, they latch on, they take a good gulp of the milk, which is what the golden hour, the couple of hours after birth are for. Ki 2 घंटे में they have their adrenaline high, they are very prepared to breastfeed, and they do breastfeed. कभी कभी जब वो latch खुद से नहीं कर पाते, then helping the mother is and the baby figure it out, because it's a new experience like you're saying. वो बहुत ज़रूरी है. तीसरा, अगर नहीं latch हो पा रहा है तो you can express and feed. Milk होता है, milk कम मात्रा में होता है, it's little, so it's little because the baby needs that much. The baby's stomach size is really small, so उसको थोड़ा ही चाहिए, और थोड़ा is enough for the baby. Just a few. But then they said कि इससे तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा, ऊपर से मिल्क हमें देना पड़ेगा. तो आई स्ट्रिक्टली टोल्ड देम नॉट टू डू दैट. आई सेड नो, प्लीज डोंट डू दैट. आप ये जो अपने डब्बे ऑलरेडी यहाँ पे ला के रखना, आप उससे भले या उसके पैसे ले लीजिए, पर आप प्लीज उसको वो ऊपर से कोई मिल्क मत देना, नहीं देना. तो देन दे सेड कि ओके वी विल नॉट गिव. तो उसके बाद क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेके वो हो गई थी, हाँ, कि मैंने कहा कि नहीं देना ऊपर से. उन्होंने बोला पेट नहीं भरेगा. मैंने कहा आज तक तो वो मेरे अंदर ही था ना, तो तब तो वो कुछ भी नहीं ले रहा था, जो भी ले रहा था मुझसे ही ले रहा था. तो पेट सडनली क्या हुआ, एकदम पेट मतलब उतना ही है ना पेट. तो it's just 1.5 teaspoon that the baby needs after birth, and then they sometimes go off to sleep for 10-12 hours. It's 1.5 teaspoon that your baby needs, and that should go to the baby, your milk. पेट भरेगा नहीं भरेगा, that's a lot of just illogical just but then they say कि वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसका पेट नहीं भर रहा. मतलब वो रोने का रीजन हो सकता है. नहीं, हाँ, बच्चा शांत हो जाता है एंड वो पी के सो जाता है, उसका पेट नहीं भरा है तो वो रो रहा है. कंफर्ट के लिए भी रो रहा है, माँ के पास आने के लिए भी रो रहा है, पर उसके बाद आप एक्सप्रेस करके पिला सकते हो. इफ यू हैव ब्रेस्ट मिल्क, एक्सप्रेस एंड फीड द बेबी. दैट्स इट. इट टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम, बट यू कैन फीड द बेबी योर ओन मिल्क. जब हम लोग अगले दिन घर आए तो उसको लैच करने में, मतलब वो प्रैक्टिस में आने में 3-4 दिन लग गए थे. तो उससे पहले हम लोग ट्राई कर रहे थे कि चम्मच से दे दे या कॉटन से ड्रिप करके दे दे, वो सब चीजें ट्राई कर रहे थे. बट हाँ, थोड़े स्टार्टिंग के दिन थोड़ा स्ट्रगल रहता है, क्योंकि आप खुद फिगर आउट कर रहे होते हो कि मतलब क्या चाहिए, क्योंकि बच्चा रोता रहता है, आपको लगता है समझ नहीं आता कि क्यों रो रहा है.
So yeah, It is. and It then takes that learning curve and somebody to tell you, "Ho jayega, keep trying, it will happen." Feed the baby. Sometimes the baby feeds and goes off to sleep, wakes up a little 36 to 90 plus hours. Sometimes they just cluster feed a lot before they fall into a pattern. Not all babies, some babies do that. So ये भी होता है कि वो थोड़ा थोड़ा पीते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में मांगते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में रोते हैं. So it's just, yeah, it is hard. The first few weeks are really the hardest yeah. in your birthing journey. Or is it like during the night? Is it like normal that the baby will ask for milk every now and then? Yeah, they can do that. They want the Okay. warmth of your body. They want to stay on you. They don't want to be put down. Because Very this I found classic. out. Hmm. उसके साथ तो अभी भी मतलब अभी उतना नहीं है, बट Hmm. बीच बीच में वो कभी उठता है because I'm still breastfeeding him and he's 3.5 right now. Lovely. Yeah. So though a lot of people say that he's sucking calcium out of you. No, he's Um, sucking nothing out of you. Yeah. So during the night कभी कभी जैसे नींद खुल जाती है या पानी पीने के लिए उठता है या कुछ भी, तो ही आस्क फॉर मिल्क. Hmm. मतलब वो पीते पीते सो जाता है अपने आप ही. मतलब मुश्किल से 5 मिनट पीता होगा फिर सो जाता है. ऐसा. Yeah, he's using the breast to soothe him back to sleep because Yeah. self-soothing is still something that he's learning. So Yeah. which is a curve that they go through. हाँ, but I don't know like till what point I should let that happen, because sometimes it gets a little like ठीक है, जब when he falls sick I understand that he wants every now and then, but कभी कभी ना क्रैंकी होके भी बार बार फिर क्या होता है कि पूरी रात आपकी भी नींद डिस्टर्ब होती है. Right. क्योंकि मतलब ठीक है 1-2 बार चलता है, बट अगर 4-5 बार हो रहा है ना रात में, then it's out of practice that he's doing Yeah. it. Yeah, रोज and then you उसकी can आदत. communicate. You'll have to communicate it to him that mama wants to sleep, and उसको पहले सिखाना पड़ेगा to self soothe and sleep, and then दिन में बताना पड़ेगा so that it doesn't come off as a shock, and then slowly if you start working on it, you will see how he's responding to it, and they do respond, and sometimes it becomes tough because if the baby is not ready, it's hard. He's not ready. It feels like he's not ready. Yeah, He said but you can no. try. You'll have to try a little harder. And actually the point is that also when he falls sick, because I'm into like natural healing and all these things, so I never give him medicines. So So your breast पूरे milk works as a yeah, medicine. that is the Yeah. reason I Yeah. don't want कि अभी वो छोड़ दे. छोड़ दे. So if you want to breastfeed him till 5, to just go with it. After 5, know that his body, and even now for that matter, his body will be able to take care of himself. Their bodies are very resilient, and they do and they can take care of themselves. So that's how you can go about it. Yeah. And I wanted to ask about the birth weight of the baby. So what was the It birth was weight? 2.1. It was over 2 kgs. कुछ मे बी 2 किलो 100 ग्राम कुछ ऐसा वेट था. Yeah. तो मतलब व्हेन ही वाज बॉर्न, तो मतलब हमें वैक्सीनेशंस वगैरह के लिए बोला गया था कि आप मतलब एक पूरा कार्ड होता है व्हिच वाज गिवन कि आप इसी हॉस्पिटल से भी लगवा सकते हो वेयर द बेबी इज बॉर्न. और स्टार्टिंग में विटामिन के वगैरह तो लगा ही था, क्योंकि वो मतलब at that time I was in another world, so I couldn't actually. Absolutely. Yeah. So then after that उन्होंने बोला कि बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा कम है, बट आई वाज सेइंग कि 2 किलो से ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 किलो तो है ना, क्योंकि मेरा वेट भी तो कम ही है. मतलब आई एम ऑल्सो 41 kgs, सो ही कांट बी लाइक मतलब वो मेरे प्रपोर्शन में ही होगा. तो बट ठीक है कि आप इसको ऊपर का दूध या ऐसा कुछ देना शुरू कर सकते हो फॉर वेट गेन. मैंने कहा वेट गेन, मैंने कहा आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड. I was not vocal in front of them, but
Yeah, I Hmm. never gave him. Hmm. In fact, I have never gave him any milk. Like Hmm. he's almost a vegan. Hmm. So yeah. But Right. then we have had experiences like um I think I discussed with you also that when he was 1 year old or more than that, like 1.25 साल का था वो, 1.5 साल का होने वाला था, तो उसको कुछ मतलब ब्रीदिंग में कुछ इश्यूज हुए और उसका पेट भी खराब होना शुरू हुआ। Hmm. और जैसे जब आपको नेबुलाइजेशन की जरूरत Hmm. होती है, Hmm. तो वो सोए जा रहा था Hmm. और कुछ भी नहीं ले रहा था Hmm. एक्सेप्ट फीड, कुछ भी नहीं ले रहा था। Hmm. Hmm. तो बस सो रहा था, बेहोशी में बस सोए जा रहा था। Hmm. तो मुझे लग रहा था कि हाँ, इट्स गोइंग टू टेक टाइम, कुछ उसको प्रॉब्लम हुई है। Hmm. बट हाँ, मतलब परेशान नहीं कर रहा था ज़्यादा। बट ऑब्वियसली आपकी फैमिली थोड़ा परेशान हो जाती है, कि उसमें मतलब वाजिब भी है कि वो परेशान हो जाते हैं। Hmm. तो आई वेंट फॉर नेबुलाइजेशन वन ऑफ द हॉस्पिटल्स, Hmm. मैक्स हॉस्पिटल। Hmm. तो मतलब उन्होंने बोला कि हम उसको जब जैसे ही ले गए, उन्होंने बोला कि उसको हम चेक कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद विल सी। बट सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, within a span of like 15 20 25 minutes he was put on ventilator। Hmm. कि सिचुएशन बहुत ग्रेव है और जान बचाना भी मुश्किल है और पता नहीं क्या क्या। मतलब मैंने कहा अब तक तो सब ठीक था, एकदम से क्या हुआ कि जान बचाना मुश्किल है। मैंने कहा वो तो बचाना तो वैसे भी आपके हाथ में नहीं है ना, आई मीन Hmm. वो तो भगवान के हाथ में, आपके हाथ में तो नहीं है ये चीज। Hmm. तो Yeah. ठीक है, मतलब फैमिली को भी लगा कि यही डिसीजन ठीक है वेंटिलेटर पे डालना। पहले उन्होंने बोला कि मदर साथ में रहेंगी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा तो, क्योंकि उस टाइम पे यू नो हाउ इट इज ना, मेरे हस्बैंड को Yeah. अलग कर दिया, वो बता रहे हैं कि कौन सा इंश्योरेंस है, मेरी मदर अलग चली गई, मैं अलग डिसीजन लेने के लिए आई वाज द ओनली वन, मेरा फोन अलग है। मतलब कुछ मैं उस टाइम पे कर नहीं सकती थी। उतने में ही उसको ड्रिप्स चढ़नी शुरू हो गई, सब कुछ होना शुरू हो गया। एंड मैं बहुत, लाइक यू कैन इमेजिन द पर्सन हु हैज नेवर गिवन एनी वैक्सीनेशन और एनी medication for that matter, and you know sees all of that happening. it's Hmm. it was like a very tough time, Yeah. and he was kept on ventilator for 7 days and was in the hospital for 12 days. And after that I was, you know, really requesting the hospital that please let me breastfeed him, Yeah. because the juices that they were giving to the child were all these Packed. sugar juices. Yeah, They were giving through packed IV. juices. Yeah, through IV they were giving packed juices. Pineapple juice which has 0.5% pineapple. I said this is not happening. At least give nariyal pani. Nariyal Which pani. Well, hospital was this? this is Max Hospital, IP extension. I don't know what to say. I mean, it's ORS is what somebody should be giving. I mean, why are you even giving drips with? Yeah. हाँ, कि I मतलब don't पता know नहीं what to क्यों, say. आई डोंट गेट, कि दही दे देंगे इससे दही। मैंने कहा प्लीज आप कुछ दही ये वो मत दीजिए, क्योंकि मैंने उसको बोला कि लैक्टोस इंटॉलरेंट है वो, कि बात ही खत्म। ये एटलीस्ट ही विल नॉट बी गिवन ऑल सॉर्ट्स ऑफ Yeah. थिंग्स। तो मैंने बोला कि आप नारियल पानी प्लीज। फिर मैंने किसी तरह रिक्वेस्ट किया कि चलो ठीक है, उन्होंने माना नारियल पानी पे। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आई वांट टू ब्रेस्ट फीड हिम। तो फिर जैसे ही वो वेंटिलेटर से हटा, मैंने उसको ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट कर दिया। यू वोंट बिलीव दैट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड ब्रेस्ट फीडिंग हिम, ही डिडंट लीव मी फॉर 24 आवर्स। क्योंकि उसको लगा था ये मुझे छोड़ के फिर से चली जाएगी, पता नहीं मुझे कहाँ। मतलब ही वाज गोइंग थ्रू दैट ट्रॉमा, यू नो। Of course, it is. Babies go through a lot of emotional trauma when they are separated from their parents. Life or death. The parent should be with the baby. That's what prevents, if it prevents anything at all, when it comes to saving a baby, the parent should be with the baby, because ज़्यादातर animal world में will power छोड़ देते हैं. Because the moment the children, babies as young as 1 year old or infants or newborns, they thrive on emotional security. That's what they need. They want to feel safe because our primal DNA is still stuck in the animal world. We feel that they're born to our parents and they need to be around us for a sense of security. Strangers will bring in that trauma. Imagine in the animal world, if an animal was left alone among strangers, the baby will have the trauma, and which is why they attach back to their parents and they're like, nay,
I want to be, and they should have allowed. I mean, of course, again, या there are tons of बहुत things, tons of policies. हाँ. Um, एंड देन yeah. बाहर आते ही उनके अलग वो, इसका तो विटामिन डी बहुत कम है, इसका ये बहुत कम है, आप इसको कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो, और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें. और उसके बाद कि इसको ये भी खिलाओ, बच्चों को सब कुछ खिलाना चाहिए, पिज्ज़ा बर्गर सब खिलाओ. मैंने कहा वो 2 साल का भी नहीं है भाई, व्हाट आर यू टॉकिंग? आई मीन व्हाट आर यू Did they say टॉकिंग? pizza burger? हाँ, they said this was a very senior pediatrician there कि आप पिज्ज़ा बर्गर सब खिलाओ. मैंने बोला हाँ मन में, ताकि फिर आपके पास आए हम कि मतलब ठीक है, उस टाइम पे तो हम किसी तरह वहाँ पे अपना वक्त काट रहे थे कि किसी तरह हम हर चीज़ के लिए हाँ बोल रहे थे कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, हाँ आप ठीक कह रहे हो, कि हमारे हाथ में बस वो वापस आ जाए, कि बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते. अल्टीमेटली तो वो हमारे. उसके बाद जैसे ही हम लोग घर आए, स्टॉप्ड ऑल हिज मेडिकेशंस राइट देयर. मतलब विटामिन डी के वो शॉट्स थे, कुछ कुछ चीज़ें थी, वो हमने वहीं रोक दी. और उसके बाद सिर्फ एक नॉर्मल नेचुरल डाइट पे था वो. अभी तक उसी पे ही है. मतलब आई ट्राई कि जितना न्यूट्रिशियस चीज़ें हो सकती मैं उसको दूँ. हाँ, तो कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि व्हेन ही रन्स, जैसे पैरों में जान होनी चाहिए बहुत, उतनी उसके अंदर नहीं है. ही दो इज़ वेरी एक्टिव, और उसका डाइजेशन इज़ ऑल्सो गुड सो फार. एंड उस कभी ऐसा नहीं बोलता कि पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ कभी ऐसा नहीं बोलता. और एक्टिव भी है. तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो विद टाइम अपने आप चीज़ें हो जाएंगी. और सबसे ज़्यादा मुझे ये बात लगती है कि अभी थोड़े टाइम से मैंने ये नोटिस करना शुरू किया दैट ही फॉल्स सिक लेसर देन अदर चिल्ड्रन इन स्कूल, lesser than, like if you compare it with anybody. I'm not comparing it with anybody. No, it's but fine, yeah, जब उसमें 2-4 बार वो उसके बाद बीमार पड़ा भी, तो हमने उसको सिर्फ मतलब वही ब्रेस्ट फीड, रेस्ट, उस पे ही रखा. कभी ट्राई नहीं किया कि मेडिकेशन मैं दूं. Right. A lot of sickness can become okay with breast milk. And when they become sick, they sleep. They sleep for hours and they don't eat anything. Maybe a sip here, a sip there. A breastfed baby will take the breast, but nothing else. Because their appetite goes low, because the immune system is now more active. So in balance, your digestive system goes low, because digestive system actually uses a lot of energy right in our body. So वो slow हो जाता है. And here I wanted to ask, in terms of breech, going back to where we were, in terms of the birth, when they saw the vaginal breech baby being born, did any of the nurses, anybody, kind of mention that we were somebody seeing it for the very first time, or anything of that sort? no No. Okay. not really. No. Okay. It And did was the a very- doctor? Yeah. हाँ, डॉक्टर ने तो वही रिएक्शन दिया था कि अरे इतना पेन क्यों सहा तुमने, आई मीन ऑलरेडी बहुत पेन सह लिया तुमने. तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया. मुझे लगा ठीक है, आई वांटेड इट दैट वे. मतलब पेन क्यों सहा, मतलब मैं जिंदगी भर का पेन नहीं सहना चाहती थी, इसीलिए मैंने सहा. Right. मतलब आई डिडंट वांट सर्जरी टू हैपन उसके बाद सफर. लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट वन सफर्स, बट देन इट मेक्स अ डिफरेंस. टू सम लेवल इट मेक्स अ डिफरेंस. Oh, quite a lot. Yeah. तो एंड आई मीन उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ठीक है, आई एडमिट कि बहुत ज़्यादा पेन था मुझे उस टाइम पे, बट शायद वो ब्रीच था इस वजह से. मतलब मुझे रीज़न नहीं पता क्या था, बट देन आई लेफ्ट टू ऑलमाइटी. मुझे लगा था कि उस टाइम पे ना मेरा कुछ भी दिमाग काम करना बंद कर दिया था कि इतना पेन में. तो मुझे लगा कि अब जो भी होगा वो भगवान के ऊपर है. मुझे नहीं पता कि क्या ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है. No, great. I mean, part of the reason I wanted to highlight their reaction was because a lot of the hospitals end up scaring the parents of breech from the very beginning, that breech hai to surgery hi hogi. The problem with this is that breech should not have to. Any baby who's breech, vaginal birth is safer for that baby than a surgery. Okay. There are research papers out there now claiming that if an attempt at vaginal birth can happen, then the medical system should prefer that
over surgery because of the lot of lack of bacteria, lack of when I say bacteria, lack of microbiome to the baby's gut. तो बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा कैसे होगा जब प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक मदर की बॉडी से गए नहीं बेबी की बॉडी में, जो मदर की उन्हीं से जाते हैं. बहुत हद तक वो एक दैट्स अ गिफ्ट एंड दैट बेबी ओनली गेट्स थ्रू बर्थ. इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरत है माँ बच्चे को बचाने की, या इवन इट्स अ पोटेंशियल इमरजेंसी दैट यू सी दैट इट्स हैपनिंग, अ लॉट ऑफ को फैक्टर्स मैच अप टू से कि हाँ नहीं अब ज़रूरत है, तब सर्जरी इज़ अ बून. Other than that, it's really morbidity. It's the second best. How can a surgery be the best at any point in time in a person's life? I believe in that. Or unless it's a mother's choice. If she doesn't want to go through pain, if she wants to have a surgery, that's her choice, and we respect that. Because for any reason, the mother should be in a place of she should feel centered. She should feel happy about the decision because she has to take care of the baby now. Unless and until she chooses, she decides for what she wants to do with her life and her baby's life, she'll not be in a place of calm. There is strength in wanting to do things the way you want, right? That's what gets us through things. That's what empowerment is at the end of the day. So anybody who chooses to do things with completely informed about what they're doing is what they should do without any of us having But to. then I feel also sometimes that women who want cesarean births, not because of most of the time, also because they're not aware, they're not informed, and और choice नहीं दी गई है. चॉइस नहीं दी भी गई है अगर, तो फियर है बहुत ज्यादा अपनी ही बॉडी को लेके. I remember how Ina May Gaskin says that this is a cultural shift. Women are scared of their own bodies. Yes. In one of the, I remember one of the quotes, he says that this is a cultural madness, she calls it. They say that they're scared of their own bodies. And So, yeah. Because they don't know. Like, when you are unaware know. and you have lack of knowledge, then obviously you say कि मेरे से नहीं हो पाएगा. I mean, क्योंकि सब लोग यही बोलते कि यार छोड़ो ना इतना दर्द क्या सहन करना है, क्योंकि पता ही नहीं है कि एंड में सर्जरी ही होनी है, हमने इतना दर्द सहा, हमारी सर्जरी हो गई. सो इट्स अ कलेक्टिव ट्रॉमा दैट that is directing the population towards a certain wanting to have certain things. And it's also the marketing. How are things marketing? इतना पेन क्यों लिया, सर्जरी करा ली थी. That's how it's being marketed, right? Why do you want to take so much pain? It's easier and it's beneficial. It's absolutely safe. Where is the person who's in charge of your safety? Where is that person really practicing ethically? That this person is not practicing ethically. The government of India does say कि आप कोई भी procedure अगर इतना बड़ा कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा अपने जो आपके पेशेंट हैं कि इसके ये साइड इफेक्ट है, आप क्या करना चाहते हो. अब यहाँ पर परेशानी ये है, द पावर इज कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द hospital and the doctors. It doesn't lie with the parents unless they've done the work of studying the way you guys did. You were educated, you knew what you were asking for, you knew it was possible. You knew a breech birth is possible, so you went for it because it was happening right there. You knew that if the hospital is slightly trained in it, they will be able to take care of it, so you took that risk. It was an informed choice. Yeah, it is true that we are in a state of collective chaos, but through the chaos, if we do not what I also feel is we'll have to look at the ground at which we are playing. हम इमोशंस के साथ खेल रहे हैं तो उनको ही अपहोल्ड करके आगे लेके जाना पड़ेगा. So if somebody says that no, I don't want to get educated, I want to have a surgery, fine. If tomorrow you realize that's your life story, you will realize if you have to. That's the story you are weaving, and that's how your baby wants to be born. Like, everybody's journey is different. And we all will learn basis our guidance, and it can come from within us only. No matter what we do, no matter what we do, no matter how much we tell somebody something, if it doesn't come from here, it's hard to convince people of even the truth, because the collective is still in a chaos. It is in a chaos. There's too much information today, and it's so scattered. There's bliss in it,
but there is absolute chaos like this. It's messed up. But then there are stories like yours where you read up, you took the charge, you decided things for yourself, fully knowing that I am owning the outcome of this. I know what's happening. I know how I want to go about it. These are my belief systems and I will work through them. Which is why at the end of the day, the first thing to do if you want to go for anything in terms of birth, even if you want to try for a normal birth, if it comes from within, is to take childbirth classes and then decide. Maybe at the end of the childbirth class, you realize, itna dard hota hai, mujhe jana hi nahi hai. Because a lot of childbirth educators will not romanticize pain because it is painful. It, to some women, it may not feel like pain. It may feel like discomfort, but to a lot of women, it can be extreme, intense discomfort in the body. Some women might be like, okay, I can take that. If these many women have, I want to take that. Some women may be like, mujhe nahi karna yaar. I don't want to. Now you guide me. How do I take care of my baby best after the surgery? And how do I take care of myself best after the surgery? That's an informed choice at the end of the day. And that's the beautiful place you want to be in. That a person decides basis what they want and they have the place to be able to do that. Neither the doctors tell us what to do, nor anyone else. That's where women get more empowered to now unabashedly do what they want to do. Okay, this mother might want to exclusively breastfeed, keep the baby off allopathy completely. Yeah. She might do certain other things she feels for. Yeah, they said that, other vaccinations are pending and we want that to happen before you leave the hospital. So we said that we have a family doctor and we'll look at that later. We don't want it right now. But they treat you like you're a very unaware, irresponsible parent. Child. You're not a parent. You're still like, I think Sanjana came on the podcast a few episodes back and she gave me this word, infantilize parents, infantilize other humans and speak to them like they're infants. Like we talk down to children, talking down to अरे तुमको कुछ पता ही नहीं है. हाँ, बच्चे हो आप, इतना रिस्क कैसे ले रहे हो आप, ये बहुत ही careless हो आप. I know better. So that's So it's like that, but then you don't want an argument kind of a thing. So you said that's okay. wise. Absolutely, yeah. That's wise. Like in the 8th month, I had to travel somewhere. So I asked Manisha ji just, off the record that I'm traveling. Though I was feeling fine, everything was fine. So I told her that I'm traveling. So she gave me some tablet ki aap ye kha lo and then you can travel then. So I said, okay. Then again I said, okay. I didn't have the tablet. And I was not actually knowing ki whether it's... Because I felt fine and if I was jumping and I was doing everything, what is the difference if I travel in car? Yeah. So, but then obviously your family is a little concerned कि नहीं डॉक्टर ने बोला है तो कुछ तो we should take care of that. दिखा लो या हाँ. नहीं दिखा लो नहीं मतलब कि नहीं करना चाहिए ट्रैवल. अच्छा, okay. मतलब गाड़ी में नहीं करना चाहिए ट्रैवल. अगर बोला है कि 8th month में नहीं करना है तो नहीं करना चाहिए. बट हाँ मतलब मुझसे पूछते तो नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए. बट ठीक है, some things you have to listen to and some things you can... Yeah, absolutely. Find a balance in life. You have to work with what you got. You have to work with... Because anyway, I had taken my family too far from what they were conventionally, what understanding they had about birth. कि एक चीज जब आ रही थी तो उनके लिए तो वो it came as a very different कि अच्छा अब ये भी नहीं कराना, अब ये भी नहीं कराना. अच्छा मतलब मैं बोला कि हम तेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बस हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है. But I really hope it ends well. Yeah, and that's what it is about, taking responsibility, radical responsibility for your own birth. And it's not just about birth. It's taking radical responsibility for all your life. It's not a good place to work from when we listen to everybody and then end up blaming. That's where we were a few generations before, maybe the last generation, where we were all relying on hearsay. उसने वो करा तो ये कर लेते हैं, उसने वो लिया तो ये ले लेते हैं.
उसका ये solution से काम चल गया तो कर लेते हैं. That's true. That's the community work. That's the tribal work. But where is our own discretion in all this? Where is the self-direction? Where is the self-guidance? And then that blame, right? उससे मुझे क्यों बताया? उससे मुझे it does come, and in the previous generation it was far more because they were all Technology. scared. I think technology उतना Yeah. नहीं थी. I mean pros and cons दोनों हैं. अब तो we are like loaded with knowledge. जितने की जरूरत भी नहीं है बहुत ज्यादा है. हाँ हाँ हर उसमें से चीज को ढूंढना लेके. पड़ता है what हाँ, what is yeah there for you? yeah and but it also makes space for, like you said, for you to have access to an educator in Hyderabad Right, that you could align with, so that can happen in today's life. She was also like she knew Shailendra ji only, and Shailendra ji connected me with her. All right. Yeah, Small world. yeah, because both of them are somehow, and she's a homeschooler also. Like she's homeschooling her 2 kids, and like she's a wonderful person if you ever get to Of course we meet can her. connect. Yeah. Great. Thank you so much, Kanika, for sharing your story with us, for giving us hope that breech birth is normal. Breech birth can happen if the care providers learn the process and learn to work with it. It can absolutely happen anywhere, and that's how we serve women and babies today, by attempting breech births, by giving the mother and the baby the Right. chance, the healthy Like chance I feel at because life. the experience of your pregnancy and how your baby is born, a lot of things in your life later depends on that. I mean, it forms a basis, a foundation for 200%. how your life will be. Like not totally, but to a great extent. Totally, So for the baby, that's the first imprint of the world. right, This is the right, world I'm being born into. So yeah, it's very important for that passage, that rite of passage, as we call in the birth world. Rite of passage is the life events. So birth is definitely the first imprint on our minds. And अब हम जितना ज़्यादा emotional health के बारे में समझ रहे हैं, we realize that our mind controls pretty much our physical body. So yeah, the mind is the primary, जिसकी वजह से the placebo effect researchers काफ़ी टेस्ट करते हैं कि आपको दवाई नहीं दी है, but they tell you that this is the medicine and it works. right, And if it works, meaning your body just gets to know it's working, so the body right, heals, and yeah. healing lies in that. So thank you so much, Kanika. There is a field beyond fear, where the body is empowered to take on labor and birth. To land there, it is crucial to take birth education. To enroll into our unique labor and birth preparation course, reach out to us at www.birthagni.com or scroll through all available prenatal and postnatal preparation classes. Thank you for listening, all in the spirit of birth, womanhood, and freedom. Remember, you got the power. This podcast is about physiological birth and does not offer or claim to provide medical knowledge or diagnosis. Starting a podcast with poor recording tools in the market? It was painful until I found Zencastr. Its high quality audio and video recording, along with the option of a backup, makes it super sturdy and a savior at times. With an easy to use dashboard and super convenient tools for advertising campaigns such as reels and videos, Zencastr is my comfort choice. Go to zencastr.com/pricing and use my code BIRTHAGNI, BIRTHAGNI, and you will get 30% off of your first month of any Zencastr paid plan. I want you to have the same easy experiences I do for all my podcasting and content needs. You may also explore their free hobbyist plan to begin with.